Hello, friends. Warm welcome to our live market discussion with SD. I'm SD Shananda Das. I'll be the host of this video. So here, basically what the plan is, it is basically market discussion, live market discussion and doubt clearing. Any kind of doubts you have related to the markets, we can discuss that. So this is a live market with learners. So let's start where we should start usually. I think you all should be able to see my screen. So today is a historic day. Bank of Japan, the last central bank to raise the interest rate from negative to positive. The Bank of Japan, as expected, raised the interest rate to 0.1% level from it was previously minus 0.1 and deposit rate at 0%. Next, the Reserve Bank of Australia came. Reserve Bank of Australia removed the hawkishness, matlab rate hike bias, and broadly overall market to guidance from these two events as the market is nervously preparing for the main event of the week that is coming tomorrow. कल से मेरा 2 दिन का live marathon चालू हो रहा है. So we'll start in the evening at 7:30 p.m. It will be a 2-hour session where we discuss about trading psychology and Federal Reserve. So here is the Federal Reserve. It is the main event of the week that is going to influence the market movement tomorrow, day after tomorrow, the coming weeks, and possibly till the next non-farm payroll comes or the next Federal Reserve interest rate decision. This event is one of the significant event when it comes to global markets. And anybody trading currencies, you'll have to pay attention to what the central banks are doing, because central banks are the ones who can create these currencies in the system. So today was a historic day because Bank of Japan raised its benchmark interest rate. Usually when central bank raises interest rate, it's positive for currencies, but what we saw today is Japanese yen declined. Why is that? Let's understand what the central bank does and what the central bank wants to communicate. There is a difference between that. So this was not a regular hawkish hike, what we call this was a dovish hike. Let me read out. We have ended our extraordinary monetary easing scheme. This was commentary from Bank of Japan ka governor Kazuo Ueda. But we still hold massive amount of Japanese government bonds. In 2012, Bank of Japan started this QQE, quantitative and qualitative easing. So they are still holding lot of Japanese government bond, lot of exchange traded funds, and REIT, Real Estate Investment Trust. They have stopped ETF, which makes sense because market has reached record high and now the risk is going up for Bank of Japan to hold these securities. Next is they are saying that, but we still hold the same goes for ETF holdings, means they are holding massive amount of exchange traded funds. These will remain remnants of the extraordinary monetary easing scheme. We will also increase bond buying nimbly if there is a sharp rise in long-term rates. Matlab, in simple terms, they will still control the volatility. Next is, so today was a big move, the widely telegraphed, matlab, wo log pehle se indicate kar rahe the, so market was not surprised because we don't expect short-term rates to rise anytime soon. It's been a sell, though this was the one which triggered a sell-off in the Japanese government bonds. Let's come to the bonds.
Those who are already students, you have been provided with the list. So look at the Japanese government bonds. Bond market was negative, means interest rate negative event, and that fuel a rise in USD JPY because dollar interest rates are still pretty high on the front end. Interest rates and currencies are very closely linked because of the big chunk of investors in the world is forex reserve managers. They hold about $10 trillion in asset broadly in bonds, and they churn between this bond, एक bond से दूसरे तरफ bond में जाके return generation की कोशिश करते हैं. And so bonds and interest, this currency rates are very much closely related. सो नेक्स्ट जो इवेंट हुआ लास्ट वीक, इफ यू अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं देन यू नो दैट फेडरल रिजर्व हैज बीन हॉकिश. उन्होंने रेट हाइक मतलब लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट को स्ट्रॉन्ग रखने का सिग्नल दिया, विच वाज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम सिग्नल इन नवंबर. And the reason is US consumer price index is not falling as fast. It is somewhat stabilizing. US का consumer price index, both core and headline is currently at 3.2%, core is around 3.8%, Federal Reserve target is 2% over the medium term. नाउ 2% से ऑलमोस्ट डबल है. लास्ट जो फेडरल रिजर्व का चेयर जेरोम पावेल, यूएस कांग्रेस में उनको बैठना पड़ता है हर इक्विवेलेंट टाइम के बाद, एंड उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि फेडरल रिजर्व विल सून बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट टू कट रेट्स. So when Federal Reserve cut rates, usually the cycle ends and we move to the final phase of the recessionary cycle that ends always with a crash. So currently, as long as the Federal Reserve historically bola jaye, it's not cutting rates, the cycle is getting extended. ये जो rally चल रहा है, it is getting extended. But उसके बीच में हम लोग एक चीज देखे from the इंटरेस्ट रेट मार्केट. यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज द मेन बेंचमार्क होता है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट का. दिस इज माय ट्विटर प्रोफाइल एंड आई ट्वीटेड आल्सो अबाउट दिस कि लास्ट टाइम डेटा के बाद व्हाट वी सॉ इन द मार्केट इज कॉल्ड बियर स्टीपनिंग. बियर स्टीपनिंग जहां पे ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट गोज अप and long-term interest rate goes up faster. This is a bad news, bear steepening in this late cycle. Bear steepening is broadly bad for risky assets, matlab equities, growth stocks, value stocks, cryptocurrencies, any kind of risky assets, they are bad. And what they are good for is the US dollar. यूएस डॉलर के लिए दैट इज गुड न्यूज, एंड वही हम लोग देखे मार्केट में कि डॉलर केम बैक. डॉलर में हम लोग एक बियरिश मोड देखे थे. लेट्स ब्रिंग द डॉलर चार्ट. सो डॉलर में जो बियरिश के बाद यहां पे मोमेंटम से क्लियरली दिख रहा है. नाउ वी गॉट अ बाय सिग्नल अहेड ऑफ फेडरल रिजर्व. नाउ इफ फेड इज हॉकिश and the market further interest rate goes up, this dollar is going to go up further. And the bearish pressure जो दिख रहा है चारों तरफ on the equities, Nifty, what an exit the rainbow setup has given. जो rainbow setup users, I hope ये setup helped you to from the exit from the top level. Now Nifty is significantly downside pressure बढ़ते जा रहा है. It's not a full bearish market. दिख रहा है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड फ्रॉम ट्रेंड कैलकुलेशन स्टिल प्रेफर्ड ट्रेड इज बाय सपोर्ट एंड बाय ब्रेकआउट. मतलब ट्रेंड के हिसाब से अभी भी बुल का पावर हायर है, बट थिंग्स आर चेंजिंग, टेकिंग अ टर्न. निफ्टी 500 चार्ट, इट हैज नॉट शोन दिस टाइप ऑफ वीकनेस इतना टाइम तक बैकग्राउंड रेड unless October time.
last year. So it's after quite a long time निफ्टी इज शोइंग बियरिशनेस और वो मोमेंटम डाइवर्जेंस से क्लियरली दिख रहा था. मोमेंटम धीरे धीरे डाइवर्ज हो रहा था. ऑल दीज कमबैक्स निफ्टी पुश किया, स्टॉक्स ट्राइड टू ब्रेक हायर बट कुड नॉट. एंड दिस ब्रेकआउट इज दिस, ये जो वीकनेस दिख रहा है मार्केट में, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वीकनेस. Because if I go to rotation ratio and if I look at small cap has not shown a weakness like this. You can see short trend fully bearish ho chuka hai. Buy trade ka win probability has significantly declined 14%, not seen since March 2023. और ये जो वीकनेस का मेन रीजन जो फ्यूल हो रहा है, दैट इज मार्केट इज बिकमिंग नर्वस अबाउट दिस इंटरेस्ट रेट. आई हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट कि 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर मैं नजर रख रहा हूं. लेट मी फर्स्ट पुट माय आर्गुमेंट. दिस इज फेडरल रिजर्व वेबसाइट, सो नो पॉइंट डाउटिंग द डेटा. So this is basically US yield curve slope या 10-2-year treasury interest rate. So whenever the curve goes into a negative, a recession has always followed. So we are in a recessionary cycle, but that does not mean sell immediately. There are certain rules to it, how we play it. Currently, we are in a buy equity mode में हम लोग थे since July 2022. अब जैसे पेड़ उगता है, हर फ्रूट मैच्योर करता है, सिमिलरली अपने पोर्टफोलियो भी मैच्योर करते हैं. आई थिंक दे आर कमिंग टू अ मैच्योरिटी नाउ कंपेयर टू जो अभी भी थोड़ा रिटर्न होना हिस्टोरिकली बाकी है. मार्केट कैन वेरी लाइकली स्टिल गो अप बिकॉज वी आर, जो सेल सिग्नल मिलना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है. दैट मीन्स मार्केट कैन स्टिल गो अप, बट द रिस्क जो बनते जा रहा है, दिस इज नॉट वर्थ इट. मतलब जो रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क ये लेवल पे हम लोग ले रहे हैं, वो डेफिनेटली स्क्यूड है रिस्क के तरफ. तो अभी जो रोटेशन मुझे दिख रहा है, ये नॉट जस्ट इनटू इक्विटीज. इक्विटीज में बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ पैसा जा रहा है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसीलिए यूरोपियन इक्विटीज अभी भी ऊपर जा रहे हैं. बट इसके अलावा जो रोटेशन मुझे दिखा, दैट इज ऑन द गोल्ड. गोल्ड के साइड, मतलब हार्ड एसेट के तरफ मार्केट टू का मेजर टर्न फिर से एक्सचेंज हुआ है. एज डॉलर गोइंग अप, गोल्ड की तरफ प्रेशर आ रहा है. बट ओवरऑल सेफ, मतलब ग्रोथ एसेट जैसे इक्विटी, दिस इज यूएस का बेंचमार्क S&P 500 डिवाइडेड बाय गोल्ड प्राइस. सो मतलब ग्रोथ एसेट से वी हैव सीन अ मूव टुवर्ड्स हार्ड एसेट्स, फ्रॉम टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स सेफ्टी. और तो इस बार जो मेरा जो मेन एरिया ऑफ फोकस है जहां से ये रिसेशनरी रिस्क आ सकता है, देयर आर 3 मेन एरियाज जहां पे मैं फोकस्ड हूं. One is there can be an interest rate shock. Let me show you. This is the third year. I'm closely watching this one. And इसके लिए मुझे पूरा yield curve के ऊपर नजर रखना पड़ेगा. ये जो ब्रेकआउट हुआ है, I don't think market is properly price this breakout. And what if the rates go significantly up in the longer end? If US rates go to 6 to 7% in the longer end, तो फेडरल रिजर्व जो है, इट कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर कर सकता है मूड को. बट सो फार this will be a danger to ignore this breakout of 40-year trend line. This determines the global cost of financing. So a financing cost shock, an interest rate shock, an inflation shock. So this is getting reflected in this interest rate. So this is one area I'm closely focusing. And because of this interest rate bear steepening yield curve, I have highly recommended in my video for past several weeks
to reduce exposure into risky equities now like S&P, और जहां पे ग्रोथ दिख रहा है, हम लोगों को ग्रोथ दिखा इन इंटरनेशनल इंडिसेस लाइक इटली सिग्निफिकेंटली गोइंग अप, तो इसमें हम लोग बुलिश हैं, और इसमें हम लोग बुलिश हो सकते हैं IND मनी में जाके। इफ वी जस्ट टू नो द टिकर जानने के लिए we'll have to go to just topics, ETF screener, type Italy, iShares EWI. So EWI. And by the way, this is illegal from India. Online foreign exchange trading is not legal, but this is legal taking this breakout, just like we have seen the breakout in Italy. So there are ways to get exposure into equities still. So वहां पे मेरा recommendation रहेगा to focus on new opportunities जहां पे risk reward is more favorable. ये वो टाइम नहीं है जहां पे आप जंप करना चाहेंगे towards growth stocks. You want to more go into value stocks. You want to keep low volatility. You want to go for negative beta. This kind of stocks you want to go for. And overall stocks से exposure ही कम करना चाहिए because stocks enjoy greater volatility. And अभी market volatile हो रहा है, साथ में stocks दे रहे हैं greater volatility means the risk going up. So volatility होता है जो actual risk, तो उसके लिए हम लोगों को enough compensation नहीं मिल रहा है. So that's why it's better to go with the indices now, जहां पे opportunities मिल रहा है, जो sectors में opportunities मिल रहा है. Go for sectoral mutual fund with a regular check on your portfolio in daily chart. Every day coming from of your office or whatever, go through the portfolio through the rainbow chart, and wherever you see weakness, risk reduce. Risk reduction, profit protection, protecting money is priority number red. Then we will be able to earn profit. So कल का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है करेंसी के लिए, तो डेफिनेटली डॉलर को देखना होगा वेदर डॉलर का ये जो कमबैक है इसको और फ्यूल मिलता है फेडरल रिजर्व से नहीं. मैं थोड़ा पोजीशन ले चुका हूं USD JPY डॉलर येन में. आज मेरा अलर्ट आया था 150.4 लेवल का ब्रेकआउट हो गया, एंड प्लस USD JPY इज शोइंग अ सिग्नल. साथ में GBP USD इज शोइंग वीकनेस. सो GBP USD एंड USD JPY इस दोनों में मेरा फोकस है सो फार. मार्केट ये बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन को ठीक से नहीं लिया, सो मतलब एज अ हॉकिश नहीं लिया, दैट्स गुड. तो डॉलर अगर फेडरल रिजर्व हॉकिश हुआ, वी विल सी सिग्निफिकेंट राइज इन द USD JPY इंटरेस्ट रेट. दैट मीन्स JPY INR is going to fall big time. So that is one focus, that is one trade. JPY INR I'm not yet taken because USD INR में ऊपर जा रहा है, मतलब INR is weak. USD JPY I have taken position. Sorry. इसके अलावा जो मेरा फोकस है वन इज क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल 6600 का मैं ब्रेकआउट लिया था, आई अनाउंस्ड इन यूट्यूब, एंड नाउ इट हैज ऑलमोस्ट रीच मेरा जो पहला टारगेट था 6941. व्हाई वो टारगेट? दिस वर द लेवल्स. दिस इज द फर्स्ट लेवल 6958, फ्लैट जोन 6945. तो ये रीजियन जो है ये क्रूड ऑयल रीच कर चुका है, ऑलमोस्ट इट हैज रीच्ड. So यहाँ से एक करेक्शन मिल सकता है. I am holding position, so I don't think I'll be exiting right now. So let's see how the crude oil goes up. Crude oil going up and Reliance will be making good profit. Why? The crude oil price is going up. That's why will be good for Reliance? No, it will be good for Reliance. Let me show why it is going to be a good time for Reliance. Commodities, let's check year-to-date performance. Year-to-date performance, gasoline price is up 29%.
and crude oil price is up about 14.55%. Reliance का profit तब बढ़ता है जब something called crack spread goes up. What is crack spread? Crack spread is basically end product like gasoline and heating oil minus the raw crude oil price. So if the end product price is going higher like gasoline, that means the overall Reliance का profit margin जो है, if they are hedging well, I hope they are their experience. I hope they are hedging well. So if they have done good hedging, they are going to do very good coming in the coming quarters. So overall, ये जो gasoline price बढ़ रहा है, this is a bad news. This may be a good news for Reliance, but that means overall level of inflation still will remain high. That means Federal Reserve will keep on hinting hawkishness, whether Federal Reserve is expected to cut interest rate. Market will be very much confused what's going on. We are going to see both-sided volatility. Late entry, खराब entry stocks पे simply मारे जाएंगे. So currently मेरा एक trade जो चल रहा है that is crude oil, but इसमें no surprise. There is another trade that did well, but उसमें profit book करना पड़ा, that is gold. But gold I'm very much focused कि gold I'm going to buy. Gold में मेरा buy का focus है. गोल्ड मैं बहुत टाइम से बाय करते जा रहा हूं. गोल्ड में मेरा बाइंग 3 टाइप्स का होता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं. वन इज दिस ट्रेडिंग, व्हाट इज गोल्ड फ्यूचर जो है, गोल्ड दिस मिनी. मेरा सारा मिनी प्रेफर्ड है, जैसे सिल्वर मिनी, उसमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट से बेटर रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग है. सो गोल्ड मिनी. दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और उसको मैं बाई करने बोल रहा हूं. स्टॉकेज सोशल में देखिए 49,000 लेवल से. इट इज सिंपली नाउ नो टेक्निकल एनालिसिस, जस्ट सिंपल बेस्ड ऑन साइकिल. साइकिल का जो सेकंड लेग आने वाला है, मतलब क्रैश लेग, दैट इज रियली नॉट हिस्टोरिकली गुड फॉर गोल्ड. सो हिस्टोरिकली अच्छा नहीं रहा गोल्ड के लिए. सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर अ ड्रॉडाउन अ मेजर इन गोल्ड इनटू द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. आई एम नॉट प्लानिंग एग्जिट. So I'll go for another round of buy. ये जो cycle है, ये cycle is behaving a bit different than other historical recession cycle. So इसमें I'll take queries. Please post queries later on. So इसमें one of the मेरा focus है जो gold. क्यों? देखिए gold जो है historically has been let me take you to Traders Insight. Traders Insight, I'll come down to gold. So इसमें वर्ल्ड दुनिया का जो सबसे बड़ा गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसका नाम है स्पाइडर गोल्ड. जो लोग बाहर हैं, आप अगर आपने ब्रोकर को बोलेंगे मैं स्पाइडर गोल्ड खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ स्पाइडर, दे विल अंडरस्टैंड आप क्या खरीदना चाहते हो. सो स्पाइडर गोल्ड ETF इज द बिगेस्ट गोल्ड ETF, और इसको हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकली. तो जब भी गोल्ड इसके जरिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मेनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गोल्ड में पोजीशन लगाते हैं. नाउ हिस्टोरिकली देखा जाए कि ये लोग जब पोजीशन लेते हैं तो यूजुअली द गोल्ड प्राइस गोज अप. तो इट इज वेरी मच हाईली कोरिलेटेड. बट समथिंग वेंट रॉन्ग दिस टाइम अराउंड. गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है, बट ओवरऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अंटिल रिसेंटली, ये लास्ट एक थोड़ा जंप हुआ है, अंटिल रिसेंटली इट हैज बीन गोइंग डाउन. सो क्वेश्चन था मेरा, हु इज बाइंग गोल्ड? अगर यूजुअल द ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जो गोल्ड को ऊपर लेके जाते हैं, इफ दे आर नॉट बाइंग गोल्ड, हु इज बाइंग गोल्ड? देन इट कम्स द मेजर सेंट्रल बैंक्स. हिस्टोरिकली जो परचेज किए हैं उससे कई फास्टर पेस में गोल्ड को परचेज कर रहे हैं. और ये आज नहीं, आई हैव हाईलाइटेड दिस स्टोरी एटलीस्ट 1 year ago कि ये होने वाला है, बिकॉज there is a major fight is going to happen
आजकल फाइट जैसे बैटलफील्ड में होता है, मेजर जो फाइट होता है दैट इज करेंसी मार्केट. If you want to destroy a country, destroy its currency. We have seen the effect in Sri Lanka. What happened to that economy if currency is in a crisis? We have seen 2013 Indian rupee crisis. Policymakers were panicking. ये करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सब मदर मार्केट है. यहां पे अगर हाई वोलेटिलिटी हुआ, देन द पॉलिसी मेकर स्टार्ट्स पैनिकिंग. एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वन ऑफ द अनस्टॉपेबल काउंटर है डॉलर. सो डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज 85% ऑफ द केस में वन लेग इन फोरेक्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, दो करेंसी का लेग, वन लेग इज ऑलवेज डॉलर इन 85% ऑफ द केस. सो गोल्ड अगर डॉलर के साथ फाइट करना है, देन वन हैज टू मूव इनटू हार्ड एसेट. ओनली वन काउंटर, दैट इज गोल्ड. गोल्ड इसीलिए सेंट्रल बैंकर्स, आई थिंक दे आर परचेजिंग, एंड आई हैव अनाउंस्ड द यूएस हैज डन अ वेरी प्रीटी बैड थिंग, दैट यूएस एंड यूरोप, दैट दे कॉन्फिस्केटेड Russian central bank's asset during this Ukraine war. That was an illegal step to do, and that means US Treasury, which is considered the safest investment, is now has a risk called confiscation risk. मतलब आपका wealth आपसे लिया जा सकता है, छीना जा सकता है. So that's a risk. So gold seems to be a better. Russia has already pegged its currency with gold. China is trying to push more commodity trading via its own currency than the dollar. So currency market is heating up for a war regarding commodities versus the dollar. And traditionally, jo historical relations that we have seen has broken up with regard to the gold. So gold, I'm interested specifically in this cycle. I'm expecting big run. इसके अलावा I'm looking at silver as well. Silver, I was reluctant. आप मेरे वीडियो देखेंगे तो I'm a late entry, late entrant. But latest round में I'm thinking strongly about silver. If there is a move towards hard asset की तरफ अगर move हो रहा है, then silver का price is still low compared to gold. We have a monthly chart, may we have a buy signal. There are a lot of levels, but this is a break which we cannot ignore. So hard assets में अगर move हो रहा है, silver is still a value buy. So that is one of the mera reason to now becoming more interested in silver via silver exchange traded fund as well as trading into silver. इसके अलावा जो ट्रेड मेरा चल रहा है, दैट इज द कॉपर. एंड कॉपर, आई हैव आल्सो डिस्कस्ड द एग्जिट in the latest video as it reached the first target zone. So it was ripe for partial exit. Let me take you to the weekly chart. I've been discussing these levels. 780 एक लेवल, और एक लेवल हम लोग डिस्कस किए थे कि 768. These are strong levels. Mountain top resistance होते हैं ये. Flat zones are strong resistance. तो वहां पे जाके we are seeing a correction in copper. So copper supply issue है. Copper का एक factor is China weak, that is demand side, but now we have supply side support into copper. I'm closely watching if there is further breakout possibility in copper. So these are broadly trades that I'm looking for. And equities, stocks have moved away. Some indices are remaining. So I'm holding more and more into cash, waiting for the right opportunistic moment in terms of equity. I'm closely looking at bonds. Bonds को देख रहे हैं कि exposure बढ़ाने के लिए, but इसमें exit signal आया था. We have discussed the exit. So इसमें अब मुझे एक sell signal चाहिए, मतलब full red candle.
If I get a full red candle, this is currently a warning. अगर ऊपर के तरफ जा रहा है, हम लोग बॉन्ड फंड में नहीं जाना पसंद करेंगे. I want a bearish candle, जो यूजुअली रिसेशन में हम लोग बॉन्ड्स में जाते हैं बिकॉज इट गिव्स वेरी गुड रिटर्न. Bonds is not just for fixed deposit or something. There are returns to be made 20-25% to the tune of. तो इसके लिए मुझे bearish signal चाहिए, इसका ब्रेकडाउन चाहिए, तब जाके हम लोग बॉन्ड्स में फिर से जा पाएंगे. और बॉन्ड्स मतलब विल गो टू TLT. TLT which is long term treasury. This is the favorite instruments for me to go into long term bonds. So that's all from my side, and now I'm ready for any kind of queries. तो आप अपने query post कर सकते हैं. It can be any queries related to any stocks, market, anything related to market. You can post your query. Okay, one query I view about natural gas. Natural gas has not been a great performer because weather का issue है natural gas में. दिख रहा है weekly is pretty bearish. So daily chart में we are basically getting a bounce back in natural gas. जो momentum से दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैंने बोला था कि ये जो सेल may not work out as a cell breakdown क्योंकि बाई सपोर्ट सेल रेजिस्टेंस आ चुका है. So that is the beauty of the rainbow setup. आप probability और preferred trades जब दिख रहा है different from the readings, that means there is a reason to do risk management. Currently you want to stay out. Probability देखिए 14, 32, 64. तो एक रेंजिश मार्केट है. Rangish market you don't want to trade. And second of all, more importantly, Prashant Jadhav ji, this query is wrong. This query is incorrect because it has no time frame attached. As long as there is no time frame, you are going to get lost in the time bulbulaya. So you have to fix your trading time frame. Without trading time frame, there cannot be effective of trade. Effect of US election and Indian election in the Indian currency and stocks, ये query आ रहा है Mr. Chakor से. So US election, sorry if I have pronounced your name incorrectly. US election is बहुत ही important event है geopolitically. Individual asset class के लिए भी it can be bullish. Like last time Trump got elected, we got a beautiful move on the upside. And मैं इसमें credit ले सकता हूँ because staying away thousands of miles away in 2016, I successfully for the firm predicted two events. One is Brexit. We made awesome move in pound yen, and another one was Trump will win the election. So बहुत सारे चीज यहाँ पे affect होता है. This is about whole geopolitical scenario. It has a lot of implications. So I'll not get into details of that one. क्योंकि geopolitical level is a different sort of discussion. Next is, how about oil company stocks like HPCL, BPCL, IOC? First of all, ये जो ऑयल स्टॉक्स एंड रिलेटेड टू ऑयल, ये जो लोग करते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो ऑयल स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, दिस इज ये क्वेरी आ रहा है के इन सुरेश जी से. सो दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट. उनका जो प्रॉफिट डिपेंड करता है दैट इज एक्चुअली एंड प्रोडक्ट लाइक गैसोलीन, जिनको हम लोग यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और रॉ क्रूड ऑयल, इनमें जो डिफरेंस है उनके वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है. But when we come to more the state-owned companies, there are not like fully private companies like Reliance. There are issues to consider. This is a general, अगर हम लोग generalize करेंगे, this is just sentiment. एक रिलायंस जो है, बीपीसीएल, उनका डेडिकेटेड ट्रेडिंग डेस्क रहता है डिफरेंट रिस्क हेज करने के लिए. प्लस उनका अलग टीम रहता है जो 5 years 10 years के लिए ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये रेट में सप्लाई करेंगे. सो वो क्या क्या रेट है, इसमें अगर हम लोग डिटेल्स नहीं जाएंगे, इट इज वेरी इलॉजिकल टू से ओके दिस इज दिस एंड दिस विल हैपन. बट सेंटिमेंट वाइज देखा जाए, if crude oil goes up, usually I think so the stocks tend to go up, but unka profit margin usually depends on the end product, gasoline,
हीटिंग ऑयल माइनस द क्रूड ऑयल, रॉ क्रूड ऑयल प्राइस, जिसका नाम है बेसिकली क्रैक स्प्रेड। क्रैक स्प्रेड जब ऊपर जाता है उनका प्रॉफिट ऊपर जाता है, उनका प्रॉफिट ऊपर जाता है, क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ता है, क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ता है, क्रूड ऑयल प्राइस ऑल्सो गोज अप। दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। नेक्स्ट क्वेरी आ रहा है जसप्रीत जिंग से, हाउ ST short term, MT medium term, LT Momo indicators. Momo means momentum. Table different from momentum bull and bear power of the bottom table in the setup. It is different in a sense. The calculations obviously is different. If we go to indicators, you go to invite only and you apply the SD rainbow Momo indicator and apply. यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं, यहां से बेसिकली ये 3 रीडिंग आ रहा है। मोमेंटम का हम लोग डिटेल्ड रीडिंग ले रहे हैं थ्रू द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। सो दिस इज अ 12 फैक्टर सेटअप। एक ट्रेड हमें अच्छा बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ ट्रेड वेरी प्रॉफिटेबल, बेसिकली हमें चाहिए ट्रेंड, मोमेंटम और प्राइस एक्शन का सपोर्ट। कोई एक से भी स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है। We have discussed in the last class. You can simply create a price action like bullish, bearish, engulfing, specific strategy. But when you are creating a mother strategy, you need the support of all the 3 horses. So this is basically, we are talking with the market. This is the easiest way to do the trading, that you are submitting to the market. Market जो बोल रहा है, आप market के साथ रहने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर मार्केट के साथ रहना है, देन यू हैव टू स्पीक मार्केट्स लैंग्वेज। मार्केट स्पीक्स इन TMP, ट्रेंड, मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन। सो उसका हम लोग डिटेल्ड रीडिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेचुरल गैस में अब शॉर्ट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा ट्रेंड, मोमेंटम और प्राइस एक्शन मेरे साथ हो। सो लेट्स लुक एट ट्रेंड। यस, ट्रेंड इज विथ मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्स। तो जो बोल रहा है मेरा जो ट्रेड्स होना चाहिए वो सेल की तरफ होना चाहिए, तब जाके मेरा जीतने का चांस ज्यादा है, बिकॉज ट्रेंड इज स्टिल विद द शॉर्ट। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, क्या मैं अभी सेल कर सकता हूं? इज इट अ गुड टाइम? लेट्स आस्क द मोमेंटम। मोमेंटम का 8 फैक्टर है, उसमें 2 + 5 7 फैक्टर है बुल के साथ, 1 फैक्टर है बियर के साथ। मतलब मोमेंटम बोल रहा है करंटली इट इज नॉट अ गुड टाइम टू सेल। देन मैं पूछ रहा हूं ओके, लेट मी ट्राई इट स्टिल, क्योंकि ट्रेंड मेरे साथ है। इज प्राइस एक्शन विथ मी? नो। द आंसर इज प्राइस एक्शन इज न्यूट्रल। बुल और बियर का फाइट चल रहा है। कैन आई सेल? आंसर इज नो फ्रॉम द मार्केट। कैन आई बाय? नो, द आंसर इज फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज द प्राइस एक्शन इज नॉट बुलिश, trend is not at all bullish. So there is no reason to jump to do any kind of trade as per this time frame. We'll have to wait for the right moment. Like यहाँ पे एक buy signal था, you attempted something, it gave small amount, then reverse, did not work out, fine. But now there is no chance to do anything. Let's wait for a further reaction, say price action bearish, and उसके लिए बस देखना नहीं है मार्केट को. That is a bad habit. तब जाके दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है. सिंपली ऑल्ट ए, प्राइस एक्शन बियरिश, और ये करेंगे तभी जाके हम लोग फ्री हो पाएंगे. इफ कॉन्टिन्यूअसली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तब जाके कैसे होगा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज देखे, फिर दूसरे जगह पे टाइम स्पेंड करे. तो थ्रू दिस अलर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट लेवल अलर्ट्स, या फिर प्लेस्ड ऑर्डर, कभी कभी ऑर्डर भी प्लेस कर दे सकते हैं अलर्ट के जगह. अक्षय जी पूछ रहे हैं, सर वेयर कैन आई गेट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉपर फंडामेंटल्स लाइक इन्वेंटरी ऑफ कॉपर ओर्स, माइन ऑपरेटिंग एंड देयर एफिशिएंसी. कॉपर फंडामेंटल्स, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मार्केट है, दिस इज वेरी मच, आई डोंट नो विच बैच यू आर फ्रॉम. अगर आप CCMT में है, इफ यू आर फ्रॉम CCMT करेंसी कमोडिटी क्लास में है आप, रेनबो नहीं, देन इट विल बी कवर्ड. आप यहाँ पे EN मैक्रो माइक्रो भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए मुझे पूछना पड़ेगा व्हाट इज द पर्पस. पर्पस क्या है? Is it for trading? Then a trader's job is not to look at
different balance sheet and deep into these dives. We want to get a broad idea. For example, copper में biggest producer is Codelco, which is Chile's company. As a trader, I don't care कि Codelco कितना produce करेगा of the copper. We want कितना supply increase हो रहा है. Percentage of increase matters for us. Even अगर news matter कर रहा, obviously news matters. But as a fundamental, as a trader, I want the percentage increase. Whereas an analyst may go on to deep ki what are the production of Codelco. So copper में there are a few names. Base metal में बहुत ही concentrated space है. मैं मेरा एक PPT दिखा देता हूं, उसमें ये आंसर आ जाएगा. So you can later take a screenshot from this PPT PDF, and then you can see which are the names. Just a moment. Yeah, got it. So copper में this is part of the CCMT course 5T analysis. As a trader, जो trader उसको कभी कभी थोड़ा, if you are looking broad picture आप समझना चाहते हो, then उनके लिए पहले important है कि look into this 5T analysis, फिर ज्यादा deep में जाए. This base metal का supply chain is very much concentrated है. उसमें few names important है, like और जो आप और की बात कर रहे हैं उसमें चिली, पेरू, दीज आर इंपॉर्टेंट. और अगर स्मेल्टर की बात किया जाए, जैसे चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिफाइंड कॉपर. सो और प्रोड्यूसर में ये सारे कंट्रीज. टॉप प्राइमरी मेटल प्रोड्यूसर कोडेल्को, स्मेल्टर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. बिरला कॉपर, जियांगजी कॉपर इन चाइना. सो ये कुछ नेम्स में हम लोग जाएंगे. उनका इंडिविजुअल वेबसाइट है, आप जा सकते हैं. और एक वेबसाइट भी है, आई हैव नॉट गॉन टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक इट इज कॉल्ड डॉक्टर कॉपर. डॉक्टर कॉपर का कोई पीडीएफ मीन्स ब्लॉग हुआ करता था, विच वाज गुड फॉर फंडामेंटल. आप अगर रेनबो टीम से, मैं ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगा. या फिर अनदर गुड वेबसाइट इज metals.com. दिस इज उनके बारे में, दिस इज विल गिव यू. लुक्स लाइक गलत वेबसाइट में जा रहे हैं. सो ये वाला सही एटलीस्ट है. किटको इज वन ऑफ द वन विच इज, जिसमें आपको न्यूज मिल सकता है. अनदर वन सब्सक्राइब वाज आई थिंक फास्ट मेटल्स. या फास्ट मेटल्स. आई थिंक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो डिटेल्स है उनके बारे में आप जान सकते हैं. उनका आई थिंक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. बट किटको इज अ फ्री वेबसाइट जिसमें लॉट ऑफ माइनिंग न्यूज. आप mining.com में जा सकते हैं. दैट इज अनदर वेबसाइट, mining.com. यहाँ पे माइनिंग का न्यूज आप जान सकते हैं. जितना आप पढ़ेंगे वहां से एक के बाद एक लिंक मिलेगा, आप और जान सकते हैं मेटल्स के बारे में. अक्षय वर्मा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टू अंडरस्टैंड इट्स साइकिल. लॉन्ग टर्म कमोडिटी सुपर साइकिल या कमोडिटी साइकिल के बारे में, आई डोंट नो विच साइकिल, देयर आर लॉट ऑफ साइकिल. एक साइकिल के बारे में मैं क्लास में बात करता हूँ, दैट इज द डॉलर क्राइसिस साइकिल, जिसके वी गो थ्रू रिसेशन, बूम एंड बास्टिंग, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई टू स्टॉक मार्केट क्रैश. ये जो है ये दिस विल बी डिस्कस्ड इन क्लास. कमोडिटी का जो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल है, दैट इज रिलेटेड that is related to China. That is
नॉट कवर्ड। इसके अलावा और एक कॉपर के साथ जो रिलेटेड है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। लेट्स गो टू ट्रेडर्स इनसाइट। कॉपर का एक रेशियो चार्ट है जो यूएस ट्रेजरी के साथ मोर रिलेटेड हुआ करता था। लेट्स लुक एट इफ देर इज, यहाँ पे भी कई सारे कॉपर डेटा अवेलेबल है। लेट मी कम टू, वहां पे आई थिंक मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो वो डेटा मिल ही जाएगा। ट्रेजरी या कॉपर गोल्ड रेशियो वर्सेस यूएस ट्रेजरी यील्ड। तो इसके जरिए भी एक जो सिक्लिकल है इकोनॉमिक साइकिल, इसको मेजर करते हैं थ्रू कॉपर गोल्ड रेशियो। इसके साथ यूएस लॉन्ग टर्म ट्रेजरी यील्ड का रिलेशन मानते हैं। सो दिस वन इज वन अदर अनदर एक स्प्रेड है जिसको यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन डिफरेंट साइकिल। If a particular stock is good on fundamentals and post purchase stock price is it better to accumulate at lower level when stocks comes back on track as per technical analysis? This is not the right approach, sir. You are really not doing the justice to yourself. First of all, अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर होते तो यू आर नॉट इन द दिस क्लास में आप नहीं होते। सेकेंड ऑफ ऑल, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे होते। थर्ड, अगर एक स्टॉक पे ऊपर आपको इतना फंडामेंटल बिलीव है, ऑब्वियसली आप उसको एक्युमुलेट करते एट लोअर लेवल। बट व्हाट वी मोस्ट आर, हम लोग जो है वी आर नॉट रियली अ फंडामेंटल इन्वेस्टर। मेजोरिटी ऑफ वी आर टेक्नो फंडा और टेक्निकल इन्वेस्टर। रिलायंस इज अ ग्रेट कंपनी, इसमें कोई डाउट ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? What happened here in Reliance? Reliance, anybody bought? Obviously, it made return, but in this phase, it did not make any return. So it's not the stock or the gem stock. जिनको gem stock ढूंढना है, you can simply exit anything like stockage, trading view, etc., etc. जितना कुछ है, you can simply reduce that cost to zero, and you can start reading the annual report as a hobby. टेक निफ्टी या 200 स्टॉक्स और उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चालू कर दीजिए एज एवरी डे। तो जरूर उसमें आप देखेंगे 3 4 5 साल बाद यू हैव बिकमिंग अ सैवी फंडामेंटल इन्वेस्टर। और उसको गाइड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वॉरेन बफे का जो सिंपल बुक है वो ले सकते हैं, या फ्री में चाहिए तो वॉरेन बफे 50 साल से हर साल एक एनुअल लेटर लिखे हैं। तो रीड द 50 years वर्थ ऑफ एनुअल लेटर and you are done about the value investing. And अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है, टेक्नो फंडा इन्वेस्टर है, then the stock, जेम stock does not matter, the जेम phase matters. जेम phase यहाँ पे था, this was the buy signal, the buy breakout, superb return, time to exit, game over हो गया। सो दिस इज द जेम फेज। आप एक स्टॉक अच्छा है, फाइन, आप उसमें ड्रॉ डाउन नहीं देखना चाहते। दिस इज रिलायंस इज अ ग्रेट स्टॉक, but this is currently in a bad phase. Why hold it? I can keep the money this time in a fixed deposit and earn some money. I can keep it cash and go to zero the bid and place my money into 91-day Indian government bond and earn a 7.3 or 7.1% return. That's quite good than rather than losing money. सो जेम फेज को याद रखिए, राइट टाइम पे एंट्री कीजिए। दो ही एंट्री, बाय सपोर्ट या बाय ब्रेकआउट। जहां पे एग्जिट हो रहा है, मार्केट को क्वेश्चन मत कीजिए, मार्केट इज ऑलवेज राइट। आप और मेरे हमारे गलती हो रहा है मार्केट को रीड करने में। रेनबो बता रहा है एग्जिट, ये बेसिकली मार्केट का लैंग्वेज बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है एग्जिट। सो अगर मार्केट बोल रहा है एग्जिट, नो पॉइंट होल्डिंग टू दैट स्टॉक। एक्यूमुलेट है तो सिग्नल मिल जाएगा। प्लेस अ बाई, यहाँ पे कौन मना कर रहा है? प्लेस एन ऑल्ट ए रेनबो बाई सिग्नल इन रिलायंस एंड बी गॉन। यू कैन सेव फ्रॉम सम ड्रॉ डाउन जब राइट टाइम, ये तो रिलायबल इंडिकेटर है। जब बाई सिग्नल आया, एटलीस्ट रिटर्न दिया है व्हाट इट।
रादर जब सेल सिग्नल था तब रिटर्न नहीं दिया है, हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। सो नो पॉइंट क्वेश्चनिंग द मार्केट, ट्राई टू फ्लोट विद द मार्केट। आप अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है फंडामेंटल वाइज, आपका बिलीव है उस स्टॉक में, ग्रेट। आप अगर फंडामेंटल देखते हैं, दैट इज एडेड एडवांटेज, कीप दैट स्टॉक इन योर लिस्ट, उसमें अलर्ट डाल के रखिए। जब भी अलर्ट मिले, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइमिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। राइट टाइम पे इज एंट्री, राइट टाइम पे एंट्री नहीं, फालतू का ड्रॉ डाउन, फालतू का प्रेशर लेना पड़ेगा। So how to find support zone in rainbow setup for Jaspreet ji? First of all, rainbow setup में जो सब इग्नोर ना करने वाला सपोर्ट जो है, दैट इज दी ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो भी फ्लैट जोन है, तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। कुछ दिन पहले का एक ट्रेड में जाने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का एक्चुअली पुराना हो गया, 15 मिनट्स का चार्ट था। सो लेट मी सी इफ आई कैन गेट बैक। I think not fully certain this was the day or this could be the day. It was similar इस दिन की तरह था, और यहाँ पे वेरी लाइकली, अगर नहीं भी था, वेरी लाइकली इस एरिया पे जो रेनबो सेटअप का ऑप्शन सेटअप है, उसमें जरूर बुल स्प्रेड का सिग्नल आया था। एंड ऑब्वियसली सारा सिग्नल तो प्रॉफिट नहीं होगा, आई डोंट थिंक दिस वन डिड दैट मच प्रॉफिट। एंड उस दिन दैट हाईलाइट भी कुछ लोग किए थे कि दैट डे दे इनकर्ड अ लॉस, एंड ब्रॉडली आई थिंक प्रॉपर प्लान नहीं था, वो एक रीजन था, प्लान के साइड से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। बट उससे भी ये अगर ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है, अगर कोई भी चार्ट आप देख रहे हैं, इमीडिएटली अगर ऐसा एरिया मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड द माउंटेन टॉप। कोई भी चार्ट में माउंटेन टॉप और उसके पास वाला फ्लैट जोन एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उस दिन दोनों साइड ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। और इसके अलावा जो एरिया और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, दैट इज द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। दिस वाज अ डबल बॉटम। ये जो डबल बॉटम एरिया है, दीज एरियाज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कभी भी कोई भी चार्ट में, बीट यूरो यूएसडी, चलिए यूरो यूएसडी ब्यूटिफुल, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द रेनबो सेटअप कि आप सिमिलर स्ट्रक्चर आप सिर्फ डेली नहीं, हर टाइम फ्रेम में दिखेगा। अब जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, रिकमेंडेड है कि हायर टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। मतलब 15 मिनट के ट्रेडर है आप, तो 125 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर ड्रॉ कीजिए। अगर 125 मिनट के ट्रेडर है आप, डेली वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर ड्रॉ कीजिए। सो यूरो यूएसडी में जो मूव हुआ डेली चार्ट में, और देखिए कहां पे एग्जैक्टली रुका, और ये सब रीजन से मुझे प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प होता है और रिस्क मैनेजमेंट से। ये जो यूरो यूएसडी रुका माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस पे, ब्रेक नहीं कर पाया, दिस स्टॉप्ड एट दिस फ्लैट जोन्स। ये फ्लैट जोन्स एक्टेड एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेट्स लुक एट DXY, डॉलर इंडेक्स। different chart, different asset, different time frame, you will see these areas। रियल लाइफ में कैंडल लाई एग्जैक्टली देखिए, माउंटेन टॉप, फ्लैट जोन, कम बैक।
अब निफ्टी पे चलते हैं, CNX 500। जब भी कोई भी, इट कैन बी यूरो यूएसडी, इट कैन बी स्टॉक, इट कैन बी इंडेक्स, जब भी कोई भी रिवर्सल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो टारगेट्स। टारगेट्स किसी को पता नहीं, बिकॉज मार्केट कहां से रिवर्स होगा वी डोंट नो, स्पेशली जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। जब कोई रिवर्सल आता है, यूजुअली द फर्स्ट टारगेट बिकम्स द एम्प्टी लाइन। एम्प्टी लाइन रीच होते ही एक करेक्शन हो सकता है। इस करेक्शन में डरने की कोई बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया, जो एग्जैक्टली इसमें हुआ। इस एरिया में सपोर्ट मिला, आफ्टर ग्लोबैक नाउ ब्रेकिंग लोअर। ये जो फ्लैट लाइंस है, ये सपोर्ट जोन्स है। अगर एक बार ये दो जोन ब्रेक हो गया, देर इज नॉट मच टू सपोर्ट द CNX 500। दैट मीन्स इट कैन ड्रॉप क्वाइट अ बिट। कोई भी डबल टॉप जब तक, दिस इज एन एज एरिया, ये रहा, और एक सपोर्ट मैं ड्रॉ करूंगा, दिस इज एन एरिया। सो ये फ्लैट लाइंस आगे जाके मुझे पहले ही दिखा दे रहे मेजर कौन सा एरिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये फ्लैट जोन, ये रहे निफ्टी का अब रेंज। अपसाइड दिस इज द रेजिस्टेंस, डबल टॉप, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दीज आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। निफ्टी के रेंज बन गए। जो ऑप्शन प्लेयर से पॉसिबली कुड गो फॉर अ स्ट्रैंगल, बट इस टाइम पे बियरिश ज्यादा है, तो बुल कॉल स्प्रेड, सॉरी बियर कॉल स्प्रेड बेहतर होगा कि आप कॉल स्प्रेड बनाए और वो प्रॉफिट में जा रहा है। सो ये जो सेटअप है इट्स क्वाइट एफिशिएंट। तो मेरा हाई रिकमेंडेशन रहेगा, जब मार्केट बोल रहा है इट्स बियरिश, गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक इंडिसेस, वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड यूल गेट गुड रिटर्न्स। पेशेंस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जब आप ये पेशेंस तभी आएगा जब आप खुद अपने हाथों से वो रूल को लिखेंगे, बीट रेनबो और एनी अदर सेटअप। रेनबो इजी है, आप कर दे रहे विदाउट राइटिंग, बट वो राइट करना इंपॉर्टेंट है, राइटिंग द ट्रेडिंग प्लान। जब ट्रेडिंग प्लान आप हाथ से लिखेंगे, तब जाके माइंड उसको उतना फॉलो करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट क्वेरी आ रहा है रजनीश जी से, इज दिस राइट टाइम फॉर पर्सन लाइक मी हु हैज ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज अबाउट करेंसी टू ट्राई हैंड इन करेंसी यूजिंग द रेनबो और वेट फॉर द कंप्लीट कोर्स टू बाय बिफोर ट्राइंग इट? First of all, if you buy one contract, it will not even matter to you. Maximum loss कितना होगा? 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 rupees. So it don't matter. But if you are jumping onto big currency, you are into real trouble. Currencies can give 70-80% return. On Federal Reserve Day, it can completely reverse any kind of technical picture. Fed is a very powerful, कुछ fundamental है, non-farm payroll, European Central Bank, फेडरल रिजर्व एंड यूएस इन्फ्लेशन डेटा। कोई भी टेक्निकल पिक्चर, रेनबो और वॉट एवर, इट कैन कंप्लीटली चेंज। जैसे स्टॉक के लिए होता है अर्निंग्स रिलीज। तो या करेंसी कमोडिटी इज नॉट नेसेसरली कि आप बिगिनर हो तो स्टार्ट नहीं कर सकते, बट इट्स बेटर टू लेट द क्लासेस हैपन। मेरा क्लास होने दीजिए, बेस्ट है। अगर आप करेंसी कमोडिटी की पार्ट है, मतलब मास्टर क्लास, अगर आप नहीं है, रेनबो में भी कवर किया जाएगा। सो वेट फॉर द क्लासेस, आपके कोई हरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेनबो यूजर्स को 365 प्लस 35 डेज दिया जाता है, so that you can invest more time into building the important psychology of writing your trading plan. No, unless you write your trading plan, no matter it is rainbow or what, you will never ever reach the trader that you can be. So first step is writing the plan, deciding on your asset class and deciding on your time frame. Then you will be able to trade confidently. How to find support zone is done. Akshay Verma ji, sir, in the rainbow we exit when we see red caps. Red caps I do for partial exit. Yellow background I do full exit.
50% कैंडल बॉडी रेड हो गया, आई डू फुल एग्जिट। रेनबो का अनब्रेकेबल रूल, इफ आई गेट अ फुल रेड कैंडल और मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट, यू एग्जिट फुल, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब यहाँ पे रेड कैंडल मतलब निफ्टी 500 यू हैव फुल्ली एग्जिटेड विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। Similarly, if you want to buy, minimum criteria is a full green candle, which is a price action bullish with short-term momentum bullish as preferred. But minimum criteria is a price action bullish. So currently it's bearish. We will stay away from stocks. पीडीलाइट इंडस्ट्रीज व्यू, पीडीलाइट बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बट ये बहुत बढ़िया था एट मच लोअर लेवल। फेविकॉल इज बहुत ही इंटीग्रेटेड है अपने इकोनॉमी के साथ, अपने यूजर्स के साथ। फर्दर कैसे ग्रो हो पाएंगे, दैट इज डेफिनेटली ए कंसर्न। पीडीलाइट इज अ ग्रेट स्टॉक, इट इज ऑलमोस्ट एज अ मोनोपोली, but is it a good time? That remains the question. So we first of all we go to the weekly chart, and weekly chart we go to the stock selection setup. This is cash stocks weekly, and we press OK, and we'll find that yes, Pidilite is having a breakout. Pidilite is not satisfying our criteria, but it is okay to do FOMO. Why? Q Rainbow का minimum criteria rule, that is a full green candle with ST Momo bullish is happening. It is a breakout attempt. कैंडल बड़ा हो रहा है, मतलब we can see volatility, but it is worth trying. It is low stock beta, मतलब FOMO क्वांटिटी के लिए पीडीलाइट इज फाइन। पीडीलाइट आई कंसिडर इज अ वेरी गुड स्टॉक, बट तो जब राइट मौका मिले वी शुड डेफिनेटली एंटर इनटू दिस स्टॉक। तो दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। अगर मार्केट में, अभी तो मार्केट बेयरिश है, अगर मार्केट में कम बैक हो रहा है, हो सके पीडीलाइट में स्ट्रॉन्गर मूव हो जब मार्केट बुलिश आ रहा है। So Pidilite an excellent find, sir. You can maintain a bullish view in this stock. अगर आप थोड़ा hedging करना चाहेंगे, आप निफ्टी वाइज निफ्टी का शॉर्ट करके hedging कर सकते हैं कि Pidilite you can go long and Nifty you can go short. तो जो एक्स्ट्रा गेन जो है बीटा गेन, that you will be able to pocket. देवेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं एफओजी इज अ वेरी स्टेट ऑफ डिजाइन टू ऑब्जर्व मल्टी इन कलर इज वेरी इंप्रेसिव बट स्टिल नॉट श्योर इट वर्क्स as of experiment could have been taken due to volatile nowadays at the current levels of basics. You 70% words are going over my head. What's the time duration of your class? This is 1.5. If you, sir, please, you don't feel confident, first of all, being confident, sir, is very important. ट्रेडिंग एक अच्छा, एक ऐसा जॉब है जिसमें आप बिना कॉन्फिडेंट का कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। सो इसमें जरूर आपको जितना कंफ्यूजन अगर आपको है, सो डोंट गो फॉर द सेटअप और एनीथिंग। सो अब ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यू डोंट नीड अ सेटअप पर्टिकुलरली दिस वन टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, बट यू नीड अ ट्रेडिंग प्लान। सो ट्रेडिंग प्लान एज लॉन्ग एज आप लिख लेंगे, कोई भी, इवन विवेक जी का सिंपल सेटअप इट वर्क्स। सो विवेक जी का सेटअप विल वर्क फॉर दोज जो उनके ट्रेडिंग प्लान विवेक जी का सेटअप देख के, विवेक जी का वीडियो देखिए और उनके सेटअप के साथ अपना ट्रेडिंग प्लान लिखिए। जब लिख लेंगे देखिएगा सिंपल हो जाएगा आपका ये जो फियर मैनेजमेंट का वो एक ही तरीका है, तब फियर मैनेज इजीली हो जाएगा, यू विल बी ट्रेडिंग मोर कॉन्फिडेंटली। सो मेरा जो सीसीएमटी क्लास रहता है, दोज आर यूजुअली 3 आवर क्लास एंड दैट्स वेरी एडवांस क्लास। काफी एडवांस डिस्कशन होते हैं उसमें, मतलब रिगार्डिंग फंडामेंटल्स एंड मे नॉट बी। मैं हिंदी कवर करता हूँ इन द एक्स्ट्रा क्लास जो मैं देता हूँ लोगों को समझाने के लिए बेटर, बट ऑल द रेगुलर क्लासेस आर इन इंग्लिश। So I'm afraid by the time I'll get some your classes might get over. How can I help you on this classes? तो आप अगर regular user है, खत्म नहीं होगा। If you are a trial user, 15 days is your only choice. उसमें option था कि आप जब ट्रायल खत्म हो रहा है, जैसे कल हम लोग क्लोज कर देंगे ग्रुप, क्योंकि कल से लाइव सेशन है, 21st मैं बहुत बिजी हूँ।
कुछ खास कर नहीं पाऊंगा एज ए कंट्रीब्यूशन, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। तो कल कल से पहले एक्सेस ले लीजिए, 15 डेज तक रहेगा। आप रिप्ले बैक टेस्ट करके देख सकते हैं इफ यू वांट टू, बट बिना कॉन्फिडेंट होके इवन ट्रेडिंग ही मत कीजिए जब तक कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। या कोई भी कोर्स हो या कोई भी सेटअप हो, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ purchase, any kind of purchase, any kind of courses. It should be clear how it is going to give you return. Like CCMT class, हो सके आप समझ ना पाए, बट उसमें जो नॉलेज शेयरिंग होगा दैट यू कैन amortize ओवर से 5 to 10 years, तो उसका कॉस्ट एलोकेशन विल बी डिफरेंट। वेर एज रेनबो इफ यू टेक अप, ऑब्वियसली सम नॉलेज स्पिल ओवर तो होगा ही, but this is then more of a 400 days based access. So इसका जो cost accounting है, it is different. So clearly cost accounting करके समझ के फिर जाके कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि सच में आई वांट द रेनबो ग्रुप में जो ज्वाइन करेंगे, आई वांट देम टू बी रिलेटिवली डेडिकेटेड ट्रेडर्स, so that they can act upon, be confident later on, act on themselves. बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सर। करंटली आई एम ए स्टूडेंट, अगर आप टीएमपी क्लास के स्टूडेंट हैं सर, देन देर इज नो नीड फॉर गो फॉर द रेनबो इमीडिएटली। टीएमपी क्लास अगर आप फॉलो करेंगे, आप अगर उसको करेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट एनफ। जो मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, जो होमवर्क दूंगा, इफ यू गिव 2.5 hours डेडिकेटेड प्लस 6 to 7 hours in the weekend, then it will happen. You have the possibility to reach the profitable trader that you can be. For live forex trading, is there any YouTube recording? Can you please share it? Live forex trading means you want to see the screen. No, there is no screen, but I think Parijat shows it as an example in a live screen. I show it in a demo account, how to click sell. It's as simple as the stock trading. You just click buy, click sell. I've already entered based on Yogesh ji bol rahe. Okay, Yogesh ji, I think you are mentioning about PD Lite probably. चकोर जी पूछ रहे हैं, कैन वी यूज एफओजी ऑन मिड कैप स्टॉक? या श्योर, एफओजी इज द मदर सेटअप, बट आप जरूर इसको अप्लाई कीजिए। ये जो स्टॉक के लिए दिया गया है, काइंडली स्टॉक को अप्लाई कीजिए, ये सब में एप्लीकेबल है दिस सेटअप। दिस इज द मदर सेटअप। दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी ओल्ड जापानीज नॉलेज। कुछ सारे जापानीज नॉलेज है, दीज आर सो फंडामेंटल्स, लाइक दिस वन। another one is Ichimoku Kinkohyo, which is without which candlesticks, वो सीखने के बाद candlesticks will never remain the same, because candlestick का missing part है वो। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह उसको सीखना चाहिए, वैसा ना तो कोई बुक में है और ना तो कोई वीडियोस में है। मैं कभी कई सारे वीडियोस मैंने देखा था आफ्टर माय सेकंड मेंटोर पास्ट अवे ड्यूरिंग कोविड-19, बट नो वन टॉट इट लाइक हिम। तो इसमें ए मुद्रा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट स्टेप है स्टॉक का या रिस्क मैनेजमेंट का, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट टू बाय। सो व्हाट टू बाय का जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्ट होता है, ये सॉरी दिस इज आई थिंक पुराना वर्जन है, रिप्ले वर्जन यूज हो रहा है, तो इसीलिए नीचे का वॉल्यूम मैच नहीं आ रहा है। लेटेस्ट वर्जन ऑलवेज यूज कीजिए। आप क्लिक करते ही लेटेस्ट रिमूव कीजिएगा। लेट मी रिमूव द चार्ट एंड शो। और ये जो सेटअप है ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट होते हैं, ये 38 वर्जन में है। सो इंडिकेटर्स में जाके एसडी रेनबो वर्जन 1 क्लिक करते ही लेटेस्ट जो अपडेटेड है वो आपको मिल जाएगा। सो कभी भी जब देख रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है ट्रेडिंग व्यू में कि ये सेटअप अपडेट हुआ है, आई थिंक इंटरनेट का इशू हो सकता है, व्हाई इट्स नॉट कमिंग। लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन अ बिट। हाँ, सो आ गया वॉल्यूम मैच।
सो अब हम लोग जा रहे हैं एमुद्रा में, एमुद्रा लिमिटेड। तो इसमें मेरा जो बेसिक क्राइटेरियाज है कि कोई भी एक टीएमपी फेज में हो, ये बहुत ही अच्छा फेज में है मुद्रा। ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वीकली ब्रेकआउट, सो दिस इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट था एमुद्रा का ये ब्रेकआउट में। सो आई होप यू आर ऑन। सो इसमें जरूर इसको ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्टॉक सिलेक्शन यूजिंग द वीकली चार्ट, दिस इज टीएमपीवी स्ट्रेटेजी। अगर आप डेली चार्ट आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, तो वीकली वीकली में हम लोग बेसिकली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। मैं सिलेक्शन करके हर वीक वो लिस्ट आप लोगों को दे देता हूं। आप उसमें से डेली चार्ट में आप जाएंगे, और डेली चार्ट में बेसिकली दो ही ट्रेड आप लोग करेंगे जो सिलेक्शन हुआ फाइनली, उसमें एक बाय सपोर्ट और बाय ब्रेकआउट। बाय सपोर्ट जब कर रहे हैं या बाय ब्रेकआउट जब कर रहे हैं, हम लोग क्या चाहेंगे, बेसिकली हम लोग चाहेंगे, विल गो टू द डेली चार्ट, we will change the stock setup to less than weekly। यहाँ पे सेकंड वाला कैश लेस देन वीकली, आप चाहे तो सेकंड में जो नीचे का पोर्शन है उसको ऑफ कर सकते हैं। अगर पूरा सेक्टर नहीं देखना चाहते हैं, यू कैन स्क्वायर ऑफ द सेक्टोरल। तो उसमें आप चाहेंगे कि स्टॉक का स्ट्रेंथ स्कोर, स्पीड स्कोर ये थोड़ा ग्रीन जोन में हो। ग्रीन जोन में हो देन तब जाके दिस स्टॉक इज इन अ गुड एंट्री पॉइंट। यहाँ पे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है एमुद्रा में, दिख रहा है आपका काफी सारा दोजी के साथ। सो मार्केट बहुत बढ़िया स्क्वीज हो चुका है, एक बिग ब्रेकआउट आ सकता है इधर अपसाइड ऑन द डाउन साइड। सो आप वेट कीजिए ब्रेकआउट के लिए। कैसे, यहाँ पे स्पीड स्कोर या स्टॉक आरएस स्टेटस है फेडिंग बुल, मतलब निफ्टी से डाउन परफॉर्म कर रहा है। इसमें ऑल्ट ए लगाइए और इसमें अलर्ट डाल दीजिए आरएस राइजिंग बुल, और हो गया आपका ट्रेडिंग। ये हो गया आपका, जब ये आरएस आ जाएगा बाय सपोर्ट करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। सेकंड, ये जो लेवल है स्पाइक का, इसका आप एक अलर्ट डालना चाहेंगे, ऑल्ट ए क्रॉसिंग अप क्रिएट। ये दो होंगे आपके मेजर पहला दो एंट्री। इसके बाद आप सिंपली रेनबो का पिरामिडिंग रूल जो है, जो लोग पिरामिडिंग रूल नहीं जानते, यूट्यूब में ऑलरेडी है वीडियो, देख लीजिए अंडर लर्न टू यूज। पिरामिडिंग रूल के हिसाब से यू कैन बिल्ड पोजीशन, एग्जिट एट रेड कैप्स, अगेन री एंटर एट ग्रीन कैंडल एंड कंटिन्यू। जब एग्जिट हो जा रहा है, यहां पे एग्जिट हो गया मैक्सिमम स्टॉप लॉस, तब जाके वेट कीजिए फिर से री एंट्री का, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये अपना जो क्राइटेरिया है वीकली चार्ट का उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वीकली स्टॉक का जो क्राइटेरिया है कि कोई ना कोई एक टीएमपी फेज में होगा, और साथ में स्ट्रेंथ स्कोर 70, आरएस स्टेटस राइजिंग स्पीडिंग एक्सट्रीम बुल, एंड स्पीड स्कोर विल बी मिनिमम 10। Next, can we, this is done. I'm having an account with HDFC here. Currency we can do directly, but como can happen over call only, which I'm not comfortable with. Which brokerage? Sir, I have no brokerage preference. जिन लोग का ब्रोकरेज के साथ टाई अप होता है वो लोग बिल्कुल ही मेंटोर नहीं है। वो लोग बेसिकली आप लोगों से पैसा चूस रहे। जो रियल मेंटोर या जो भी है, रियल एटलीस्ट गुड पर्सन है, वो कभी भी ओवर ट्रेडिंग का बात नहीं करेगा। सो आई हैव नो ब्रोकरेज के साथ टाई अप, नो ब्रोकरेज प्रेफरेंस। मैं अपना अकाउंट की बात कर सकता हूँ। आई हैव अकाउंट विद जीरोधा, which I trade. I have account with Fires, which I do. I have opened account with Dhan, not a big amount over there. I do trade with SAS online because उनका currency brokerage cost is सबसे कम है. It is about 400-500 per month, which is nothing. A fixed brokerage system से वो बेहतर लगते हैं. But angel broking is good. So you can do online trading with Dhan. जीरोधा इज फाइन, जीरोधा में भी कमोडिटी ट्रेडिंग किया जा सकता है। सो ओवरऑल कोई भी ब्रोकरेज प्रेफरेंस है नहीं मेरा।
Sure, Rajnish ji जा रहे हैं. Do you know urgent call? What is the meaning of volume match in FOG? So stock जो है देवेंद्र जी, stock में first of all, I personally have sit or worked with little bit of big traders, millionaire dollar traders. My brother works with Goldman Sachs, manages about $1 billion fund, 10 billion, 10 plus $1 billion quant fund. Quant fund is a quant manager. So overall, I have a little bit of fair idea how powerful the real FIIs are. First of all, the real FIIs that you see in the stockage data or Nifty data, those guys are not the real FIIs because Indian market is too small to accommodate this FII guys. But still they invest in India via different exchange traded fund and via different route they invest. Now, these players have everything, latest state of the art knowledge. They have latest flow data across the asset class. They have big client book. They have central limit order book. They can see your stop loss. So there is no way to basically beat them. Except one. उनका एक मेजर वीकनेस है, इसके अलावा उनका कोई भी वीकनेस नहीं. So only weakness they have is their size. They cannot hide. Whenever these consolidations are happening or consolidations are largely happening in the market, these players are basically changing positions. So how to catch them? I have created a free to use indicator which anyone can use, whoever has the link. You don't need my permission. SD Rainbow Volume. जो लोग CCMT जैसे TMP स्टूडेंट्स है, आप लोगों को कैलकुलेशन दिया जाएगा. So whenever this is present, this green color, that means big players or this expansion is there. The theory is the small players cannot make these expansions happen. Only big players can make this expansion happen. This is a Bollinger Band. So this expansion, especially with the green color, is showing the presence of the big players. So that you don't have to watch this indicator. Some of the students still you have got the trading view ka mega discount. Some are using low value account so that they can get the same value with two indicators. This volume match is added. Whenever the volume match is happening, this I did not keep as a must criteria. It is a preferred criteria. क्योंकि कभी कभी स्टॉक्स, देयर आर 1000 स्टॉक्स, सो हो सके एक आपको मिल जाए जिसमें अभी भी बिग प्लेयर्स जा नहीं रहे, उनसे मिस हो गया. दैट्स व्हाई वॉल्यूम मैच इज नॉट अ डेफिनेट क्राइटेरिया, बट वॉल्यूम मैच इज अ ग्रेट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट वेयर बिग प्लेयर्स आर हैपनिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग. उसका आंसर हमें मिलता है रेनबो का कैंडल से. If rainbow candle is red, that means big players are largely selling. If with this expansion, you can see the rainbow candles are green. That means big players are buying with this expansion. That gives us more confidence that this stock can go up because 85% of the case, big players win. So the volume match data is basically coming from this SD volume indicator. देवेंद्र जी पूछ रहे हैं, what is the subscription charges for FOG?
Subscription charges for FOG depends, first of all, the headline price जो है, that is 30,000 plus 18% tax from the government. Now, what is will be the subscription charge depends on your relationship with the existing relation with the ELAR markets. You are a trading mentorship program, very likely you get the best of the discount that there is. Or if you're a stockage member, I think you get less discount. Whatever the discount is or whatever the charges is, I do not control that. That is handled by Arpan Bhattacharya. But this is not just the setup. This is about our regular classes like this continue to happen, about doubt clearing, about different asset class clarifications, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है के एन सुरेश जी से. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली रीड द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द एफओजी का जो दिया गया है लेटेस्ट गाइड. उसमें डिटेल विथ एग्जांपल्स डिफरेंट चीज समझाया गया है, along with कौन सा स्पेशलाइज्ड पैटर्न्स है स्टॉक में, चार्ट पैटर्न्स जो रेनबो का बहुत प्रॉफिटेबल है. सो दिस काइंड ऑफ data are already there in the guide. ये जो क्रॉस मार्किंग्स है, ये रहे मिनिमम स्टॉप लॉस. रेनबो का ये रहा मैक्सिमम स्टॉप लॉस और ये रहा मिनिमम स्टॉप लॉस. डिफरेंट तरीका एग्जिट करने का. यू कैन यूज द रेड कैप्स फॉर एग्जिट, यू कैन यूज द मिनिमम स्टॉप लॉस फॉर एग्जिट, you can trail some quantity with the maximum stop loss. So white cross is basically the minimum stop loss. Latest 7 to 9 candles में दिखा रहा है. मैं in the future updates I will give you the मतलब आप डिसाइड कर पाएंगे आप कितना दूर तक ये व्हाइट क्रॉस देखना पसंद करेंगे. मीन्स जितना टाइम जा रहा है आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर, आपके ऊपर कंट्रोल दिया जा रहा है ज्यादा अगर आप इसमें चेंज करना पसंद करेंगे. Any other query? Otherwise, we have almost come. It is observed the price goes up, then within week time it drops. What does it mean? First distributed security when the volume and price. Sometimes it's actually example के देखें, example के साथ get back कीजिए सर. देखना होगा उसमें अदर कौन सा फैक्टर्स है. आप खुद भी देखिए उसमें रेनबो का जो अलग फैक्टर्स दिया गया है, जैसे ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था. व्हाट ये जो प्रेफर्ड ट्रेड्स है, इफ आई गो टू द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, यहाँ पे जो प्रेफर्ड ट्रेड्स दिया जा रहा है वो क्या बोल रहा था. वो क्या बोल रहा था, ब्रेकआउट, और या बोल रहा था सेल रेजिस्टेंस एंड बाय सपोर्ट. या प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा था. ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, प्रेफर्ड ट्रेड्स कैलकुलेशन एंड दिस रेनबो कैलकुलेशंस आर केप्ट सेपरेट टू डू रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू. तो ट्रेड जब ले रहे पूरा शांति से लीजिए, क्योंकि हम लोग जब अच्छे ट्रेड में होंगे तब बढ़िया रिटर्न मिलेगा. सो देयर इज नो हरी टू डू ट्रेडिंग. अब खत्म हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हिस्ट्री हो गया जो प्रॉफिट. जब प्रॉफिटेबल फेज था, वी एंटर्ड, वी एंजॉयड. नाउ इट्स नॉट अ गुड टाइम, नाउ वी एग्जिट. रेनबो सेटअप का मैक्सिमम स्टॉप लॉस, दिस इज अनदर एग्जांपल. Bombay Stock Exchange price 2,500. Rainbow stop loss 1,200. Isn't it crazy? But look at how fast it is going up as there is a chance of reversal. और finally exit हो जा रहा है around 2150, जो ट्रेड का एंट्री आया था for the first time 511 पे. यहां पे भी ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट, उसके बाद वो ब्रेकआउट फॉल्स हुआ, इमीडिएटली रेनबो का कैंडल का मैक्सिमम स्टॉप लॉस स्क्वीज हो गया. आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फुल रेड कैंडल दे दिया आपको एग्जिट करवाने के लिए, सो दैट यू डोंट रिमेन इन दैट स्टॉक अंटिल और खराब टाइम आ जाए. सो करेंटली आपका फोकस होना चाहिए फर्स्ट ऑन द टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम पे गलती हो गया देन इट्स ऑल लॉस्ट. Once टाइम फ्रेम इज डिसाइडेड, फिर सिलेक्शन टाइम फ्रेम डिसाइड होगा. अगर 125 मिनट आपका टाइम फ्रेम है, फिर सिलेक्शन टाइम फ्रेम है डेली एंड वीकली.
उसमें 10 फैक्टर के जरिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो पारिजात आप लोगों को लिस्ट देता है फ्रॉम निफ्टी 100 स्टॉक्स। और जब टाइम अच्छा रहेगा, ऐसे राइट टाइम पे एंट्री करना चाहिए, जैसे बाई सपोर्ट, करेक्शन के बाद एक फुल ग्रीन कैंडल, बाई सिग्नल, बाई सपोर्ट, लेवल का ब्रेकआउट, बाई ब्रेकआउट, हर ब्रेकआउट के साथ एक एंट्री, न्यू हाई बना रहा है, री एंट्री थोड़ा थोड़ा, जैसे रेड कैप एग्जिट, रेड कैप्स के बाद फिर से ग्रीन कैंडल, री एंट्री, ऊपर जा रहा है, वी आर ट्रेलिंग द स्टॉक, और जब टाइम खराब हो गया विल स्टे अवे। Sometime, okay, this one, last one is time, I think, big break chance in the table. This is actually, इसके ऊपर मैं दो फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहा हूं, दिस इज नॉट ओवर, कि कोई 52 हाइक का ब्रेकआउट दे सकता है, बिग रिटर्न दे सकता है, मतलब और भी, क्योंकि स्टॉक हजारों है, उसमें से जेम कैसे निकाले उसके ऊपर काम चल रहा है। तो उसमें एक जो फैक्टर दिया गया है, इसको और फाइन ट्यून किया जाएगा कि बिग ब्रेकआउट चांस ऑन द अपसाइड कैश स्टॉक्स के लिए। तो अभी इसमें वेरी लो है, तो इसमें कोई बिग ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड होने का चांस है नहीं। सो बिग ब्रेकआउट चांस, ये भी एक फ्यूचर में एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बन सकता है। दिस इज वन आई एम वर्किंग ऑन, इंप्रूव होगा फ्यूचर अपडेट्स में। अनदर वन आई एम वर्किंग ऑन, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जो मदर कैलकुलेशन है, मतलब जो मेंटोर से मेरा टीचिंग्स के ऊपर बेस नहीं है, दिस वन, कि पावर बैलेंस। सो पावर बैलेंस इज नॉट वर्किंग अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। Power balance is for stock future only, and in the lower time frame it is not working. The other components like these, they will work across the time frame. Unfortunately, power balance is can currently be used for only stock selection in daily and weekly chart. It cannot be used in the execution time frame like 125 minutes. सो करंटली आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, जो आप फ्यूचर अपडेट में आप लोगों को दिख जाएगा। वन इज हाउ टू इंप्रूव द लॉन्ग बिग ब्रेकआउट चांस, सेकेंड इज पावर बैलेंस इंप्रूवमेंट, थर्ड इज कि हाउ टू बाई एट द स्विंग बॉटम। ये जो मार्केट में स्विंग चलता है डिफरेंट, तो उसको कैसे बॉटम बाई किया जाए, नॉट विद द टेक्निकल एनालिसिस बट विद द वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी को कैसे हम लोग लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब वोलाटिलिटी के साथ कैसे साइकिल का एंड समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी में वोलाटिलिटी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वोलाटिलिटी स्ट्रक्चर, VX1 माइनस VX2। और वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर्स में चेंज हो गया जब से लास्ट दिसंबर में फेडरल रिजर्व गेव ए हॉकिश व्यू ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाई, और देखिएगा तब से निफ्टी में जिगजैग ट्रबल बढ़ चुका है। सो देयर आर वेज बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस टू फाइंड आउट दिस सिक्लिकल, और जैसे ये फेज, this phase is an excellent time to remain aggressive on equity longs, but currently not a time to be an aggressive on equity longs। ये हम लोग different volatility index and other कुछ factors है जिसके जरिए हम लोग जान सकते हैं। तो this is one thing I am currently working on। currently ये जो main mother setup है, इससे एक sister setup निकला है SD Rainbow Wave option, जो स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, और एक सेटअप निकलेगा इन द फ्यूचर दैट विल बी एसडी रेनबो वेव जस्ट फॉर इक्विटीज, जिसमें आई विल ट्राई टू इंक्लूड दीज सिक्लिकल फैक्टर्स। Will I get support on FOG once after
इज देयर एनीवन करंटली एफओजी यूजर? कोई हमारे जो रेनबो ग्रुप में है, कोई है करंटली इन द जो ऑडियंस में? I invited some of the students from Rainbow Grooming Batch, and also from the, okay, Akshay ji use but regular user सुरेश जी, तो आप ही बोल दीजिए, डू यू गेट सपोर्ट और नॉट? तो देवेंद्र जी का क्वेश्चन का आंसर बेस्ट आप लोग ही दे सकते हैं, इफ यू गेट सपोर्ट और यू डोंट गेट सपोर्ट। तो एटलीस्ट सुरेश जी बोल रहे हैं सपोर्ट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द सपोर्ट। आई फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2019 आई डिसाइडेड आई विल नॉट गिव ट्रेड्स टू एनीवन, बिकॉज बहुत दिन हो गया मेरे ट्रेड से, बहुत लोग बहुत कमाए हैं, बट वो दिन हो गया, मैं अब खुद कमाना चाहता हूँ। So I continuously guide via YouTube. I continuously take sessions like this. We take basic sessions. We take counseling session every 6 months. There will be, one can take counseling sessions, direct discussion करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी का, सो इसमें डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका सपोर्ट आप खुद सबसे बेहतर कर सकते हैं। हम सबको अपना ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबका खुद का, सो बेस्ट वी गिव सम एफर्ट टुवर्ड्स दैट, और हम लोग देंगे तो जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा ही। जैसे अभी निफ्टी, निफ्टी में जो मैंने किया, मैंने बेच दिया निफ्टी को, और छोटा क्वांटिटी बेचा हूं, एंड जस्ट एज पर सेटअप। तो अभी कैश अगर नहीं मिल रहा है, कैश इक्विटी नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ऑप्शन या फिर फ्यूचर के बारे में। सो उसमें जो बेसिक सिखाई है, व्हाट इज बेसिक ऑफ ऑप्शन, उसके बारे में भी इसमें क्लास लिया जाता है। द पार्ट दैट विल नॉट बी डिस्कस्ड, आई मतलब स्पेसिफिकली मैं नोटिस करके डिस्कस नहीं करूंगा, दैट इज द फंडामेंटल। क्योंकि करेंसी कमोडिटी में जो टीएमपी करेंगे उनको भी कुछ अलग मिलना चाहिए। सो एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल, दैट पार्ट, और ये जो साइकिल, रिसेशन साइकिल, ये उसका फंडामेंटल जो है, रीजन क्या है, दोज थिंग्स विल नॉट बी डिस्कस्ड इन द रेनबो। अदर कैसे ट्रेड करना है, कहां ट्रेड करना है, दिस विल ऑल बी डिस्कस्ड। और फ्यूचर में जो प्लानिंग की कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी एक चेंज हम लोग करेंगे उसमें, कि करंटली जो लाइव ट्रेडिंग सेशन या लाइव डिस्कशन सेशन जो चल रहा है, लार्जली इवनिंग को चल रहा है। सो इसमें हम लोग अब एक्सपायरी का दिन भी ऐड कर देंगे। मतलब निफ्टी का थर्सडे एक्सपायरी, तो हम लोग एक्सपायरी वाला एक सेशन ले लिए, तो उसमें फोकस है कि आज निफ्टी का क्या ऑप्शन ट्रेड करेंगे, 9:15 को 3:30, या 9:15 से 10:30, 10:30 के बाद 1 आवर ब्रेक, उसके बाद फिर से वी कैन कंटिन्यू। तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेशन हम लोग ऐड करेंगे इसमें फ्यूचर में। इंडियन ऑयल का एक क्वेरी आया, इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पे मोमेंटम इज नॉट गुड, एग्जिट सपोर्ट में है, बाउंस हो सकता है, वेरी गुड, नाउ इज नॉट अ गुड टाइम, हम लोग वेट करेंगे। फेडरल रिजर्व में एनीथिंग कैन हैपन। अगर फेड हॉकिश कुछ बोला, उसके बाद यील्ड कर्व बियर स्टीपन किया, देन यू विल सी अ बिग ड्रॉप इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो इफ इट इज रेड, बेटर टू अवॉइड। जब ग्रीन होगा, बढ़िया राइट देगा। पेशेंस इज द की। मार्केट से पैसा हटा लीजिए, हटा के कैश बने रखिए। बहुत लोग इस बार रोने वाले हैं, एटलीस्ट आप आपके ट्रेडिंग प्लान लिख लेंगे तो एटलीस्ट रोएंगे नहीं। इतना जो मतलब अगर स्मॉल कैप देखा जाए, पागलों की तरह बड़ा है, तो क्रैश जो होगा या ड्रॉडाउन भी हुआ तो इक्विवेलेंट फोर्स में होगा। इसीलिए स्टॉक में बहुत लोग फंस के ऑलरेडी चिल्ला रहे कि अरे स्टॉक रेड हो गए, पोर्टफोलियो रेड। राइट टाइम, जब मार्केट वार्निंग दे रहा है, हर जगह पे मार्केट का वार्निंग को इग्नोर मत कीजिए। दिस इज बेसिकली अ टॉकिंग टूल। जो मार्केट आपसे बात कर रहा है, आसान है, इसीलिए लोग का पसंद है। आसान है, मार्केट आपको बोल रहा है एग्जिट, तो एग्जिट।
आप कोई भी सेटअप आपके लिए भी खुद बनाएंगे तो उसमें भी आप प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट का सुनेंगे। अगर मार्केट सेल है तो आप सेल हो। अगर आईओसी बढ़िया स्टॉक है रख दो अपने लिस्ट में, जब बाई सिग्नल आएगा बाई कर लेंगे। जब सेल है नो पॉइंट फाइटिंग द मार्केट, इट विल गो डाउन। स्टॉक सिलेक्शन ऑन वीकली बेसिस यूजुअली, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। इसमें लोगों का कंफ्यूजन रहता है, सर स्टॉक कब एंट्री करें या ट्रेड में कब एंट्री ले या एग्जिट ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब लोग, हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे फंडामेंटली सोचेंगे। तो फंडामेंटली हर जो बड़े ट्रेडर है, वॉरेन बफे उतना नहीं बोले बट जो बिग ट्रेडर्स है, मार्क मिनर्विनी बोले हैं, फिर राकेश झुनझुनवाला जी बोले थे कि प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन डज नॉट मीन देर आर बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। Price action means there is only a fight is happening between a bull and a bear. जैसे गुड और इवल का एक इटरनल फाइट है, सिमिलरली बुल और बियर का एक इटरनल फाइट है। कोई हमेशा के लिए जीत नहीं सकता। तो ये फाइट इज लाइक ए बॉक्सिंग मैच। तो बॉक्सिंग मैच अगर देखे होंगे खत्म होता है जैसे टिंग, 3 मिनट बाद वो बेल क्लिक होगा तभी खत्म होता है। सिमिलरली जो टाइम फ्रेम हम लोग सिलेक्ट किए उसमें एक क्राइटेरिया है प्राइस एक्शन, जो ये कैंडल अगर बुलिश बियरिश मिक्स, तो अगर क्या है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्लोजिंग या नियर क्लोजिंग तक। जैसे मैं प्रेफर करूंगा आप ट्रेड करो एज ए बिगिनर 3 और 3:30 के बीच में। कभी कभी इसमें आप बोल सकते हो कि सर लेट हो जाएंगे, मेजोरिटी टाइम आप देखोगे आप सेव हो जाओगे। बिग जंप के बाद बहुत बार स्पाइक दे के मार्केट नीचे आ जाता है इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो एज ए बिगिनर इट इज अ गुड हैबिट टू स्टे टिल द एंड और नियर द एंड। दैट्स व्हाई वीकली चार्ट हम लोग जब देख रहे हैं वी वांट थर्सडे एंड ऑफ द डे, ताकि ऑलमोस्ट वीक खत्म हो रहा है, प्राइस एक्शन में मोर श्योरिटी मिल जा रहा है। तो जब कब क्लोजिंग तक वेट नहीं करना है वो आता है एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। जैसे मारूबोजू कैंडल हुआ, आपको पता है फेडरल रिजर्व क्या किया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिग रन फ्रॉम मॉर्निंग एंड दैट इज हैपनिंग। आप कैंडल क्लोजिंग तक का वेट नहीं कर रहे हो, मेक सेंस। But otherwise, it is a very good habit for a beginner. Always wait for the candle closing. You will see your trades are improving. Alerts are, they are valid only if they stays till the time of closing. अगर कोई buy signal आके closing तक चला जा रहा है, that buy signal is not a valid buy signal. आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द क्वेरी आई होप आई वाज एबल टू आंसर। आज का जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया, इट वाज हेल्पफुल, क्योंकि हम लोग का टाइम खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 hour 30 minute सेशन। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, मेड अवेलेबल टू यू सून। ये यूट्यूब में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग कोई भी यूट्यूब में जाके ये रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। पॉसिबली कल इवनिंग तक ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। आई होप, मुझे अच्छा है लगा कि आपको भी अच्छा लगा है सेशन। थैंक यू सो मच एंड एवरीवन हैव अ ग्रेट नाइट। और जो लोग रेगुलर यूजर है, हम लोग कल मिलेंगे 7:30 बजे टू डिस्कस ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बिकॉज अभी तक हम लोग फियर मैनेजमेंट सीखे हैं, जो हु आर इन द ग्रूमिंग बैच हम लोग सीखे हैं ग्रीड मैनेजमेंट, बट अब वी नीड टू डिस्कस द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट, and we'll discuss the FOMC, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और नेक्स्ट डे फुल डे मैं और पारिजात आप लोगों के साथ अवेलेबल है टू डिस्कस ऑन द ट्रेड्स। और जो मेरे ट्रेड्स बनेंगे इन द करेंसी कमोडिटी स्पेस, आई विल बी टेकिंग इट। जो पारिजात के ट्रेड्स बनेंगे इन द करेंसी कमोडिटी स्पेस और अदर जो वो पसंद करेंगे उनके हिसाब से, so that trades he will be taking.
सो आप लोग जो ऑप्शन ट्रेडर है, आपको भी डिस्कशन मिल जाएगा, आप लोग भी ट्रेड कर सकते हैं ऑन द थर्सडे हमारे साथ। यूजुअली आज तक कभी भी मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं किया हूं, बट हम लोग का डिस्कशन एट द एंड ऑफ द डे जो भी किए हैं, they usually have been very profitable except for two occasions. One we could exit broadly break even, one we made loss since 2021. So far जितना भी सेशन हुआ है, दो को छोड़ के we have been very profitable on these sessions. So thank you so much and have a great night ahead.